चार, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जान। अगर हमारे हृदय में प्रभु वहाँ वैर संबंध है, पत्नी पति को मारे दे रही है, पति पत्नी को मारे दे रहा है, छोटी छोटी जगह छोटी छोटी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पुत्र माता पिता की हत्या कर रहे हैं, माता पिता पुत्र की हत्या कर रहे हैं। कहाँ प्रेम संबंध रह गए? जो मोह है, अज्ञान है, उसी अज्ञान के कारण तो हाहाकार मचा हुआ है। दुख का मूल कारण अविद्या है, अज्ञान है, और ये गुरु कृपा से नष्ट होता है। जब हम गुरुजनों के चरणों में बैठते हैं और गुरुवाणी का अध्ययन करें, गुरुवाणी को सुने, संत महापुरुषों के वचन सुने और खूब नाम जप करें, तब अज्ञान का नाश होता है। अज्ञान का नाश होते ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो दुख का कारण अज्ञान ही है, और जब तक ये नष्ट नहीं होगा तब तक जन्म मरण, बार बार जन्म बार बार मरण, हर योनियों में जाना, नाना प्रकार के दुख भोगना, ये चलता रहेगा। जयेश चाहर जी, राधे राधे। नगर से। महाराज जी, पिछले लगभग 2 वर्षों से मेरा अध्यात्म की ओर झुकाव हुआ है। महाराज जी, मेरे अंदर एक प्रश्न आ रहा है कि माया क्या है, संसार क्या है, और भगवान ने ये खेल ही क्यों रचा? जीव संसार में बार बार आता है और चला जाता है, इस सब में ईश्वर आखिर मतलब उनका अंदर आंतरिक इच्छा क्या है? एको हम बहुश्यामा, पहले ईश्वर ने रचा क्यों, ये बात समझो। किसी और को नहीं रचा, वो अपने आप को रचा है। वो अपने आप से बहुत रूपों में हो गया, वो अपने आप से अपने आप को रचता है, अपने आप से अपने आप का पालन करता है, और अपने आप से अपने आप का विनाश कर लेता है, किसी और का नहीं। वो अपने आप में खेल रहा है। ये सब रूपों में वही विराजमान है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचित मात्र कुछ नहीं है। वो किसी और की रचना नहीं की, वो अपने आप से अपने आप की रचना की। अब आप अपने आप को भूल गए हो, अपने हृदय में बैठे भगवान को भूल गए हो, इस शरीर को मैं मानने लगे हो, और भोगों में रत हो गए हो, इसलिए दुर्गति को प्राप्त हो गए। माया उसे कहते हैं जो है वो दिखाई न दे, और जो नहीं है वो दिखाई दे।
जैसे स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य नहीं है, परमात्मा है, तो परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा, और जड़ चैतन्य स्त्री पुरुष अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है, ये माया है। और परमात्मा है, ये जब भक्ति और ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि पवित्र होगी तो ये नहीं दिखाई देगा। सब में परमात्मा, सब में राम रमा है, सब में कृष्ण रमा है, सब में वही वाहिगुरु, वही इष्ट विराजमान है, दूसरा कोई नहीं है। तो हमारे अंदर जो ये भ्रम पैदा हो गया कि भगवान ने मुझे क्यों फंसाया, तो भगवान ने नहीं फंसाया, आप खुद फंस गए। आप कौन हैं? आपने कभी विचार किया कौन है आप? आपने कभी अपने को देखा? उसी का तो महाराज जी पता नहीं लग पा। हाँ, उसी का पता लगाने के लिए जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो खूब हृदय में बैठ करके निरंतर नाम जप कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो जिन खोजा तिन पाइया, और जब पाइया तो वहां दूसरा कोई नहीं मिला, वही आत्मस्वरूप मिला, वही मैं मिला, वही दूसरा कोई नहीं, दो नहीं है, एक ही है पूरी सृष्टि में। जब खोजने वाले ने पाया तो खोजने वाला नहीं रहा, पाया जब तो वही मिला जो खोज रहा था, दूसरा कोई नहीं है। महाराज जी किया कैसे जाए, मतलब कोई गुरु नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर यात्रा ही नहीं शुरू होगी। यात्रा तो गुरुदेव से ही शुरू होती ना। गुरुदेव का वरण करो, गुरु चरणों का आश्रय लो, नाम जब शुरू करो, उपासना शुरू करो, तो यात्रा प्रारंभ हो। स्कूल में नाम नहीं लिखाया तो ककाहरा मात्रा जब याद नहीं, तो फिर कैसे पढ़ाई शुरू? पीएचडी तो तब पहुंचे हम जब पहले ककाहरा मात्रा से तो शुरू करें। तो प्रथम हम गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर उपासना शुरू करें, किसी संत महापुरुष का आश्रय लो और उपासना प्रारंभ कर दो। वो आपका विषय है, वो आपका विषय, वो हमारा विषय नहीं। वो आपका विषय कि आप आश्रय किसका लो और कैसे उपासना में चले, ये पद्धति से चलो। भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा। वाहिगुरु जी। महाराज जी हमें वृंदावन में इस रमणीय स्थान में आकर ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी तरफ अकाल पुरुष ही अलग अलग रूपों में विचर रहे हैं। महाराज जी, आप जी प्रभु की सारी जिंदगी भक्ति करी, नाम जपा, अब वो ही परमात्मा आपसे मिलने के लिए आपके भक्तों के रूप में आप ही दर्शन देने आ रहे हैं। महाराज जी, जितने भी लोग हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो इस स्थान के सेवादार हों, साधक हों, या फिर आने जाने वाले दर्शनार्थी, प्रभु ही अलग अलग रूपों में आपका ख्याल रख रहे हैं। महाराज जी आपसे मिलने आ रहे हैं। ध्रुव सत्य है, परम सत्य है, परम सत्य है। लाखों लोगों के रूप धारण करके वही परमात्मा दुलार कर रहा है, क्योंकि जीवन में उसके सिवा और किसी को अपना माना नहीं, उसी को माना, तो वही इतने रूपों में प्यार कर रहा है। इतने लोग आकर प्यार करते हैं, सब नौजवान लड़के वैराग्य लेकर के अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर सरकारी, और वो हमारी सेवा में है। ये भगवान का प्यार नहीं तो और क्या, वही है, वो इतने रूपों में प्यार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महेंद्र सिंह राठौड़ जी। महाराज जी आपके चरणों में प्रणाम। महाराज जी, मैंने आपके बताए अनुसार आपकी हर बात को पूरी श्रद्धा से अपनाया है और मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। अब तो नाम लेने के बाद भी कुछ भी करता हूं तो चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो, तो यही विचार आता है कि क्या इससे मेरे भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे, क्या ये उचित है। इस प्रकार के विचार मेरे भीतर उठने लगे हैं जब से राधा नाम मेरी सांसों में बस गया है। अभी जैसे कोई छात्र परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार करता है, वैसे ही मैं अब श्री जी के दर्शन की उत्सुकता से जब करता हूं, लेकिन जब बात अपनी मृत्यु की आती है तो हृदय थोड़ा कांप जाता है। महाराज जी, क्या ये मेरा मोह है क्या? हाँ, अभी अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। जब मृत्यु का भी भय ना रह जाए तब अज्ञान। मृत्यु किसकी होनी है? हमारी तो कभी होनी नहीं। अविनाशी जो हमारा स्वरूप है उसकी कभी मृत्यु नहीं होनी, और शरीर ये नाशवान है, इसका नाश होगा ही होगा। तो जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है तो मृत्यु का भय नहीं रहता। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर, जैसे हमारा कपड़ा फट जाए तो हमारा क्या नुकसान हुआ, लेकिन अगर अज्ञानी का कपड़ा फट जाए तो एक ही शर्ट है वो भी फट गई उसकी, वो तो बड़ा दुखी हो जाएगा। और जिसके पास ज्ञान हो गया है और धनी है, उतार के रख दिया, दूसरा पहन लिया। आत्मा का एक कपड़ा है शरीर। इस शरीर के नाशवान होने के कारण इसका नाश होगा, तो इसके नाश से हमारा कभी नाश नहीं होता। हम अविनाशी हैं और ये विनाशी है। हम चैतन्य हैं और ये जड़ है। हम एक हैं और ये अनेक है। शरीर अनेक है, आत्मा एक है। हमारा आनंद स्वरूप है और ये दुख में है। तो इसलिए जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होता तो केवल कहने से
भय दूर नहीं हो जाएगा। नाम जप करो, सच्चा ज्ञान जब उदय होगा तब मृत्यु का भय नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु किसी की नहीं होती। शरीर अपने पंचभूत में मिल जाते हैं और आत्मा अविनाशी है, मृत्यु किसी की नहीं हुई। पंचभूतों का पंचभूतों में मिल जाना ही मृत्यु है, अपना तो कभी नाश होता ही नहीं है। पर अपना शरीर से राग है, तो शरीर छूटने के भय को ही मृत्यु कहते हैं कि हमारा शरीर छूट जाएगा। तो हमारा शरीर छूट जाएगा, यही अज्ञान है। ये जब ज्ञान प्राप्त होगा तो शरीर छूटने का भय नहीं रहेगा। महाराज जी, अभी गत वर्षों पहले परिवार में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, कुछ 2-3 जनों की। तो महाराज जी उनके बाद मतलब बहुत भय रहता है, और महाराज जी उन्होंने श्री जी की कृपा से उन्होंने बहुत कुछ किया था। इसका नाम क्या है लोक का? तो यहां सब मरेंगे, हम हो या आप हो, आज हो या कल हो, जाना तो है ही। इसके लिए क्या सोचना? इसके लिए चाहे जो चले गए उनके लिए क्या सोचना, जो हैं उनके लिए क्या सोचना, जो आगे आएंगे उनके लिए क्या सोचना, क्योंकि जो भी आ रहा है वो मृत्यु लोक में आ रहा है। कभी भी किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। गीता बहन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी हमारा पूर्व समय पशु तुल्य रहा है, परंतु उसी समय में हमें श्री जी की कृपा से कई संतों के दर्शन एवं सत्संग का सौभाग्य मिला। पंडित बाबा, चंद्रशेखर बाबा, विरागी बाबा और कई संतों का। महाराज जी हजारों जन्मों में ना निकलने वाले सभी प्रकार के प्रगाढ़ विकार बिना कोई साधन किए श्री जी ने कैसे जला दिए, हमें आश्चर्य होता है। ऐसी कृपा महाराज जी हम जैसे अधम जीवों पे कैसे हो सकती है? महाराज जी सब पे ऐसी कृपा क्यों नहीं होती? कई लोग अत्यंत दुखी हैं। देखो, जो दुखी किसी भी तरह से दुख हुआ और किसी भी तरह से भगवान के चरणों में मुड़ा, कहीं भी एक अंदर से पुकार आई कि हे भगवान, अगर तनिक भी भगवान के प्रति जुड़ा हुआ तो भगवान द्रवित होकर संतों का संग दे देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। और जब संतों का संग होता है तो सब प्रकार के दोष, अहंकार, अविद्या, अज्ञान, ये सब नष्ट हो जाता है और भगवान से सहज प्रीति होने लगती है। भगवान के नाम जप में प्रीति होने लगती है, दैवी संपदा उसके अंदर आने लगती है। कहीं न कहीं जीव जब भगवान को पुकारता है तभी उसको सतमार्ग की प्राप्ति होती है। और जो भगवान को ना पुकार कर संसार में ही है, उनको नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। ईर्ष्या, राग, द्वेष इतना भरा पड़ा है, पूछो मत। लोग जल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, कामना, इसी में जल रहे हैं। आप अपने सुख को देखकर सुखी नहीं हो रहे, दूसरे को सुखी देखकर दुखी हो रहे। जरा सी वस्तु के लिए भाई भाई में बैर, बड़ा विचित्र माया का खेल हो रहा है। जहां प्रेम सौहार्द होना चाहिए वहां दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञान है। इसलिए भगवान की शरण जो होता है उसे संत संग मिलता है, क्योंकि संत संग बिना हरि कृपा के नहीं मिलता। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि कृपा करते हैं, राम जी कृपा करते हैं, तब संतों का संग मिलता है। और संतों का संग मिलने का मतलब अज्ञान का नाश होना, अंदर ज्ञान प्रकाशित होना। जैसे अभी ये छोटा ही बच्चा तो है, कह रहा कुछ समय से सत्संग सुना, नाम जब शुरू किया, हमारे अंदर आनंद आ रहा है, हमारे अंदर विकार धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो सत्संग से, साधु संग से निश्चित विकारों का नाश होता है और भगवत चरणारविंद में प्रीति होती है। पर सत्संग उसी को मिलता है जो थोड़ा भी सही पर भगवान से जुड़ना शुरू कर दिया, भगवान को पुकारना शुरू कर दिया। कल्पना शर्मा जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी क्या महामाया को परब्रह्म कहा जा सकता है? परब्रह्म की ही इच्छा महामाया है। परब्रह्म की इच्छा ही महामाया है। तो भगवान और भगवान की इच्छा दो थोड़ी है, एक ही है। इसलिए भगवान शक्तिमान है और वो भगवान की शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान अभेद है, इसलिए वो भगवान ही है, कोई अंतर नहीं। आदेश अग्रवाल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी यदि गुरु बिना मुक्ति नहीं, तो क्या जिन्होंने गुरु ना बनाए हो तो अंत समय में अगर राधा नाम लेने से उन्हें मुक्ति मिलेगी? अंत समय का सिद्धांत अलग है, अंत अलग अलग सिद्धांत है।
अंतःमति सोगति, इस सिद्धांत में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जीवन भर पाप किए हो और अंत समय राधा निकल आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जो पाप कर्म किए हो वो पाप कर्म तुम्हें भगवान नाम स्मरण होने ही नहीं देंगे। जैसे अजामिल का प्रसंग आता है तो उसमें संतों की कृपा हुई थी अजामिल के ऊपर, इसलिए उस पुत्र का नाम नारायण रखा। संतों की कृपा के कारण उसी पुत्र में उनकी आसक्ति हुई और मरते समय उसी पुत्र का ध्यान आया और नारायण बुला दिया, कल्याण हो गया। अंतिम समय भगवान का नाम आना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्म प्रयास करते, अंतिम समय भगवान का नाम स्मरण होना बड़ा कठिन है। वो अंतिम समय नाम स्मरण हो गया तो कल्याण हो गया, मंगल हो गया। बिना गुरु के भी यदि अंतिम समय भगवान का नाम आ जाए तो जीव का परम कल्याण हो जाए। राज शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी नजर सभी भगवानों में राधा रानी को देखती है, इसमें और भगवान महाराज जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे? और है ही नहीं, तत्व एक है, तत्व एक है, रूप अनेक है। तो अगर हम राम जी को माने, श्याम जी को माने, राधा जी को माने, दुर्गा जी को माने, किसी एक को मान ले तो सबको मान लिया। किसी एक की पूजा कर ले तो सबकी पूजा हो गई। सब रूपों में एक ही विराजमान है और कोई नहीं विराजमान। इसलिए ये कभी न सोचा जाए कि हम राम जी को पूजते हैं, अन्य भगवान को नहीं पूजते तो अन्य भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे। हम राधा जी को पूजते हैं तो कहीं अन्य, ऐसा नहीं। एक की पूजा भाव से करो, सबकी पूजा हो गई, क्योंकि सब रूपों में एक ही है, कोई और नहीं है। तृप्ति जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये कहा जाता है कि लाइफ में सब कुछ पूर्व निर्धारित है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम जो भी कर्म करते हैं, लाइफ में पूर्व निर्धारित है। सफलता असफलता, सुख दुख, जन्म मरण। लेकिन नया कर्म, इसके करने के लिए हमें अवसर मिला है। हम अब अच्छा कर्म कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, मन को रोक कर। सफलता असफलता जो भी कर्म करते हैं, लाइफ में पूर्व निर्धारित है। सफलता असफलता, सुख दुख, जन्म मरण। लेकिन नया कर्म, इसके करने के लिए हमें अवसर मिला है। हम अब अच्छा कर्म कर सकते हैं, भगवान का भजन कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, मन को रोक करके, इंद्रियों को रोक कर पापाचरण से बच सकते हैं। इसके लिए हमें चांस दिया गया है। पूर्व निर्धारित पूरा जीवन हमारा सुख दुख, असफलता सफलता। जैसे हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। अब पूर्व का प्रारब्ध है दुख भोगना, इसलिए अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है। बहुत बढ़िया ग्रेजुएट हमारे लिए घूम रहे हैं, कोई व्यापार नहीं, कोई नौकरी नहीं, बहुत परेशान। ये पूर्व का प्रारब्ध है। और एक है कि ज़्यादा प्रयास नहीं किया, सफलता होती चली जा रही, ये उसका पूर्व का प्रारब्ध है। लेकिन हम पूर्व के प्रारब्ध को परास्त कर सकते हैं वर्तमान के नवीन कर्म के द्वारा। अब हम जैसे भजन शुरू कर दें तो भगवान का भजन हमारे भाग्य को बदल देगा। अब हमारे सफलता ही सफलता मिलती चली जाएगी। इसीलिए सब लोग भजन करो, शराब न पियो, मांस ना खाओ, दूसरी बहन बेटियों की तरफ गंदी बातें मत करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, अभी भाग्य बदल जाएगा। नहीं तो भाग्य के अनुसार तो फिर सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे कुछ निजी संबंध ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे उनसे मिलना, बात करना, यहाँ तक कि उनसे मेरी जिंदगी में होना भी मेरे को चिढ़ मचती है। महाराज जी, फिर भी मैं उनसे गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल गलत है। संबंधी हो या ना हो, हमें सबके प्रति प्रेम व्यवहार रखना चाहिए। हमारा आंतरिक कोई लगाव ना हो, लेकिन हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए। हम किसी के प्रति घृणा नफरत ना रखें, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सब में भगवान विराजमान है। हम किसी से भी घृणा करेंगे तो अपने भगवान से ही घृणा करेंगे, ये ठीक नहीं है। चाहे जितना कोई गलत आदमी हो, हम उसको बता सकते हैं आप गलत हो, लेकिन हम उसके प्रति भाव नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि उसके हृदय मंदिर में भगवान विराजमान है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चे सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, बात करने योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारे राधा वल्लभ लाल विराजमान है। ये मेरी दृढ़ मति है। तो हमारे जो शास्त्रों में लिखा है, सिय राम में सब जग जानी, सब में भगवान विराजमान है। किसी से घृणा नफरत इस कोटि का किसका संसार में होना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। महाराज जी,
अगर हम उनसे ऊपर से हंस मिल के बात करते हैं, बट ये कहीं दोगलापन तो नहीं? नहीं, ऐसा मतलब नहीं। कि अंदर से नहीं, तो ये बात करने का नहीं, मन नहीं है? अंदर से हमारा किसी से कोई संबंध नहीं, लेकिन बाहर से हम, यह आदेश है, हंसी बोले बहुमान दे, तरुषम सहनशीलता हो, वृक्ष के समान सहनशील है, उसके किए हुए कटु व्यवहार को सह रहा है, लेकिन बाहर से मुस्कुरा के बोल रहा है। ये मर्यादा है, ये गंभीरता है कि हम व्यवहार में मृदु व्यवहार करें। अंदर से हमारा कोई आपसे संबंध नहीं, लेकिन बाहरी हमारा व्यवहार मृदु होना चाहिए, यही साधुता है। संत किसी से भी अपनापन नहीं रखते और किसी से भी द्वेष नहीं है, सबसे व्यवहार मृदु करते हैं और किसी से अपनापन नहीं। मान लो आपको बहुत प्यार से मिल रहे हैं, तो आपको लगे कि वो हमें प्यार कर रहे हैं, तो आप देख लो पाई भर तुम्हें प्यार नहीं कर रहे, वो अपने भगवान को देखकर सबसे प्यार कर रहे हैं, तुम्हारे शरीरों को नहीं, तुम्हारे संबंधों को नहीं, वो सब में भगवान विराजमान। इसलिए मृदु व्यवहार, प्यार व्यवहार हमें करना है। ये दम्भ नहीं होगा, ये पाखंड नहीं होगा कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और नहीं, ये शास्त्र की आज्ञा है। हम विश्वास करते हैं कि इनमें भी भगवान विराजमान है, इसलिए हम उस क्रोध को दबाकर मुस्कुरा कर बात करते हैं। हिमांशु जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तत्व एक है, लीलाएं अनेक हैं, तो क्या वो तत्व क्या है जो लीलाएं कर रहा है महाराज जी? वो तत्व कैसा भजन, दिखता है? भजन करो, किसका प्रश्न है? भजन करो तब जानोगे। अब कोई आम, तरबूज, मनुष्य, चिड़िया, पशु, पक्षी, ऐसा थोड़ी उसको संबोधन किया जा सकता है। तत्व है, अनुभव गम में भजें जय संता। जब संत जन भजन करते हैं तो उस तत्व का अनुभव हो जाता है। उसी को ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, भक्त जन भगवान कहते हैं, अज्ञानी जन जीव कहते हैं। वही चराचर रूप में फैला हुआ तत्व है, एक है, अनेक रूपों में भास रहा है। जैसे एक शीशा का महल हो और कई प्रकार के शीशे होते हैं, शीशे भी कई प्रकार के होते हैं, एक आपका लंबा मुंह दिखा देगा, एक आपका चौड़ा मुंह दिखा देगा, एक छोटा कर देगा। ऐसा महल हो तो उस महल में आप अपने आप को ही कितने रूपों में देखेंगे, लेकिन आपके वो असली रूप नहीं है, असली रूप आपका कुछ और है। तो भगवान का असली रूप है सच्चिदानंद, ये मायाकृत है। ये जो अनेक रूप भास रहे हैं ये मायाकृत है नहीं, भास रहा है। जैसे स्वप्न में भी हमने अपने को देखा था, लेकिन हम स्वप्न में नहीं थे, हमारा शरीर तो सोया हुआ था, और स्वप्न में भी हम देख रहे थे लड़ाई झगड़ा सुख दुख, लेकिन जब जगे तो वो झूठा नजर आया। ऐसे ही अज्ञान की धरा में अभी है, ये दिखाई दे रहा है, जब इससे जगेंगे तो ये झूठा नजर आएगा। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। हाँ, ये स्वाप्निक जगत है। जब आप ज्ञान में जगोगे तब तत्व का साक्षात्कार होगा। जब तत्व का साक्षात्कार होगा तो एक ही अनेक में दिखाई देगा, एक में ही अनेक और अनेक में ही एक। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके नेत्रों से कभी ओझल नहीं होता। तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अब तत्व को ऐसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता क्योंकि अनिर्वचनीय है। उसे आप जो भी नाम दें वो उससे परे है, आप जो भी बोले वो उससे परे है। जैसे सब के हृदय में आत्मा है, देखा है क्या? बस केवल संबोधन है। आत्मा क्या है? न कोई यंत्र बता सकता है, न कोई व्यक्ति बता सकता है। क्या है? अनुभव करो। कोई यंत्र नहीं बता सकता, वाणी से आप नहीं कह सकते। वाणी से कह वो ब्रह्म है, तो ब्रह्म क्या है? वो तत्व है। वो तत्व क्या है? अब इसके आगे बोलोगे तो क्या बोलोगे? यही बोलोगे, भजन करो और अनुभव करो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अनुभव की होती हैं, जिनको बातों में व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। तो जो भगवत तत्व है उसे वासुदेव कहो, राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो, राधा कहो, शिव कहो, शक्ति कहो, वो सब है। वो सब होते हुए एक है। अब उस एक का अनुभव करना है तो फिर पूरा जीवन लगा दिया जाता है भजन में, तब वो बात बनती है। भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से तो उस तत्व का अनुभव, जब अनुभव हो गया तो मुक्त हो गया। जो ही अनुभव हुआ तो वो तत्व और कोई नहीं निकला, आपका स्वरूप निकला, क्योंकि आप भी तो वही है ना। तो जब अपने स्वरूप का अनुभव हुआ तो जीवन मुक्त हो गया। अब ये भजन से होगा बच्चा, ये कोई लौकिक कहानी या लौकिक वस्तु या लौकिक पदार्थ या लौकिक स्थान तो है नहीं।
ये तो अनुभवगम में भजें जय संता, ये अनुभव का विषय है, अनिर्वचनीयम। कुछ अब जैसे आपको गुलाब जामुन पवावे, पूछे कैसा है, आप कहोगे मीठा है, नहीं कैसा मीठा है, बहुत मीठा है। अब इसके आगे उत्तर दीजिए कैसा बहुत मीठा है, तो क्या उत्तर आएगा? खा के देख लो, आएगा कि नहीं? अनुभव, आप अनुभव करके देख लो कैसा मीठा है, इसके आगे आप उत्तर नहीं दे सकते। मीठा, बहुत मीठा, इसके आगे कैसा मीठा है, आप इसका उत्तर नहीं दे सकते। इसका उत्तर है कि आप गुलाब जामुन खा के देख लीजिए, क्योंकि वो जो स्वाद है वो वर्णन नहीं किया जा सकता। सोचो, एक पदार्थ के आनंद का स्वाद वर्णन नहीं किया जा सकता, फिर वो आनंद समुद्र परमात्मा का कैसे वर्णन किया जा सकता है? तो जितना वर्णन किया जाता है वो सब अधूरा है, पूरा तो अनुभव से होता है। जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा, जो वाणी में आ रहा है उससे बहुत परे है। वो मन बुद्धि वाणी इनके अगोचर तत्व है, क्योंकि मन बुद्धि वाणी को वो प्रकाश दे रहा है, ना कि उनसे वो प्रकाशित है। हम वस्तु के आनंद का वर्णन नहीं कर सकते, तो भगवान के आनंद का, तत्व के आनंद का कैसे वर्णन कर सकते हैं? इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, भगवान का आश्रय लो, तो वो स्वयं जाने जे देव जनाई, वो तुम्हें जना देंगे कि ये तत्व है, तो तुम ही अनुभव कर पाओगे, लेकिन दूसरे को नहीं बता पाओगे। फिर वो दूसरे को जनाएंगे तो जान पाएगा। जी महाराज जी, आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न है। ये कह रहे हैं कि मतलब हम गलत आचरण हो जाते हैं महाराज जी, उस पर हमारा वश नहीं है, और ये आप कह रहे हैं कि आप नशा और फिर से उसमें लग गए हस्तक्रिया आदि, और इनका भी टाइम है महाराज जी, वीरनाश और गलत आचरण, आप संभाल नहीं अपने आप को। हाँ, अब इसके लिए संभालने के लिए दो बातें हैं, एक तो आप संभलना चाहो और दूसरा भगवान का भजन। आप न समझना चाहो तो कोई कैसे संभाल सकता है आपको? आप नियम लो, मैं ये नहीं करूँगा, और भगवान का भजन करो, वो आपको नियम पालन में सामर्थ्य देगा। जो भगवान का नाम जप है इसमें बल है, तो जब हम नाम जप करते हैं खूब अधिक से अधिक, तुम्हारे अंदर बल आ जाता है, हम गंदे कार्यों को रोक सकते हैं। और दूसरा नियम से। अकेलापन पूरा लगता है, दिल्ली में तैयारी करता हूँ, हाँ, जैसे ही अकेलापन आता है वैसे ही तो बहुत आनंद है यार, अकेलेपन में नाम जप करो तो कितना आनंद है। हम तो चाहते हैं कि भगवान मुझे अकेले कर दें, तुम यार तो सोच रहे हो कि भीड़ मिले, और हम सोच रहे हैं अकेलापन मिले। कोई दोस्त भी नहीं है हमारा। दोस्त की जरूरत नहीं है, दोस्त के चक्कर में मत पड़ो। गर्लफ्रेंड की चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, अरे बेकार समस्या में फंस जाओगे। भगवान को दोस्त बनाओ और फिर वो दोस्त रूप में आवे, उनकी बात अलग है। भगवान को दोस्त बनाओ, वही सच्चे दोस्त है। संसार कोई दोस्त, यहाँ छल कपट है बच्चा। अभी जो चैन से हो ना, दोस्त बना लोगे तो चैन तुम्हारा चला जाएगा, शांति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। अकेलापन बहुत अच्छा। लोग कहते हैं मैं अकेलेपन से ऊब रहा हूं, हम कह रहे हैं तुम्हें अकेलेपन में जीना नहीं आता, नहीं अकेलापन बहुत अच्छा। अपनी बस्ती में तो है यार, किसी का कोई डिस्टर्ब नहीं, किसी की कोई, और भगवान का चिंतन बनता है। अकेले में भगवान का भजन करने लगो तो इतना आनंद आएगा कि रोने लगोगे। पर वो थोड़ा भगवान से संपर्क अंदर से नहीं तो ऐसा लगता है प्रगट में कोई होना चाहिए। लेकिन सही पूछो, अकेलापन बहुत जीवन, सुंदर जीवन है, यदि आप उसे संभाल पाओ तो बहुत सुंदर जीवन है। किसी से कोई मतलब नहीं। आप दोस्त बन जाइए। हम तो दोस्त बनने के लिए तैयार, लेकिन हमको बनाते ही नहीं कोई दोस्त क्योंकि हमारे दोस्त बनाने में शराब छूट जाएगी, बाल छूट जाएगा, गंदे आचरण छूट जाएंगे, नाम जप करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अच्छे बनो। हम ये चाहते हैं कि आज हमारे नौजवान भाई अच्छे आचरण करने वाले बने। जो गंदे गंदे आचरण करके जेल भोग रहे हैं, सजाएं भोग रहे हैं, ये सब बचना चाहिए। ये मन ही तो है, हम मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो गंदे आचरण करा दिए, जिनके परिणाम में हमें सजा हो रही है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अब देखो कैसे कैसे बच्चे खुद सुसाइड कर रहे हैं। देखो दिमाग खराब हो रहा है ना, खुद कर रहे हैं, वो कहीं फेल हो गए या किसी नशे में या किसी से ब्लैकमेल हुए, गंदे आचरणों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद। अरे नहीं यार, मनुष्य जीवन मिला है बहुत सुंदर जीवन जीने के लिए, अच्छे आचरण करके जियो, ये गंदे आचरणों से नहीं। महाराज जी, कुछ जने तो निकलना ही नहीं चाहते इस। वही हम देखो, पहले इनसे कहा कि दो बातें हैं,
पहले तो खुद ठीक होना चाहो और दूसरे भगवान का नाम जप कल एक करो। आए थे, कह रहे थे कि हमारे दोस्त भी सुनते हैं, कहीं गलती से आपकी रील आ गई, बट यहाँ आना नहीं चाहते कि ये जो अभी कर रहे हैं सब छूट जाएगा, हाँ, पक्का आपके पास आते ही छूट जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब वो आपका सानिध्य चाहते ही नहीं है कि मतलब उस ठीक है थोड़ा थोड़ा सुन लिया चलेगा, बट ये हमारे गंदे आचरण ना छूट जाए, इसलिए आपके संग में क्योंकि नहीं उनके आना बिना वो जी नहीं सकते, ऐसी उनकी आसक्ति हो गई है कि अब शराब के बिना नहीं जी सकते, व्यभिचार के बिना नहीं जी सकते, और बाबा जी के पास गए तो ये छुड़वा देगा, इसलिए मेरे साथ आने वाले थे जी। तो कह रहे थे कि अभी थोड़ा सा रुक जाओ महाराज जी, से बहुत डर लगता है अभी। एक साल दे दो, हाँ, तब थोड़ा एक साल और। गलत आचरण। जाते हैं इवेंट्स वगैरह में तो कह रहे कि बैठना पड़ता बिजनेस के लिए, इन सब के लिए तो जरूरी आते तो मतलब उनका जब दृश्य सामने आता है फिर नहीं हो पाया। आपसे बहुत डर लगता है हमारा। जी। हमारे माता पिता को बचा देखो होता है। आज हमारे माता पिता जी गुरुजी 14-15 साल से डिप्रेशन में है गुरुजी। यार बच्चा अगर माता पिता नाम जप करें तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। नाम जप करें, उनसे कह दो राधा राधा नाम जप करो, नाम जप से ही बचा जा सकता है, नहीं तो जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रिशूल। भगवान का नाम संसार रूपी रोग का औषधि है, तीनों तापों को शांत करने के लिए महान औषधि है। जो भगवान का नाम जप करते हैं वो समस्त दुखों से निपट जाते हैं। यार प्रार्थना करना अपने माता पिता से कि वो नाम जप करें। हितेश जी सूरत से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर जाने अनजाने में कोई पाप या भूल हो जाए तो क्या भगवान इसी जन्म में उसका दंड देते हैं या अगले जन्म में देते हैं? नहीं, पहली बात तो है कि जाने और अनजाने में बड़ा अंतर है। नहीं, जाने में और अनजाने में बड़ा अंतर है। अनजाने में ऐसा है कि जैसे अचानक पैर पड़ गया और कोई जीव मर गया, हम मारना नहीं चाहते, ये हुआ अनजाने में। लेकिन जानबूझ के मारना उसे हुआ जाने में। तो जो जानने का दंड है वो विशेष है और अनजाने का वो माफ भी है, क्योंकि आपका उद्देश्य मारना नहीं था। जैसे एक बार हम बर्तन मांजने के लिए श्री जी के पात्र मार्जन करने के लिए मिट्टी लेने के लिए गए, तो अब हर जगह से मिट्टी तो ले नहीं सकते, कहीं थूका हो कहीं कुछ हो, तो मेड़ से मिट्टी लेने गए। तो फावड़ा से पहले ऊपर की हटा के फिर नीचे की लेने, तो जो ही फावड़ा मारा सो खन खजूर नहीं होता, अब वो कट गया। अब हमारा उद्देश्य तो जीव को कष्ट देना, बड़ा हृदय में व्यथा हुई अनजाने में, तो वो व्यथा से ही क्षमा हो गया। जैसे हृदय में जलन हुई ना कि अरे राधा 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 ऐसा कैसे हो गया ये, तो वो जो अंदर व्यथा हुई तो अनजाने में हुए पाप। जैसे आपका पैर पड़ गया, कोई जीव मर गया, तो आपके हृदय में ताप हुआ, वो उसी समय समन हो गया। लेकिन जानकर जो पाप किया जाता है वो इस जन्म में नहीं होता, वो आगे प्राप्त होता है। क्योंकि पीछे जन्म में जो हमने पाप किए उनसे जो शरीर बना, उस शरीर को सुख दुख भोगना पड़ेगा। जैसे इस समय हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पीछे हमसे पाप कर्म हुआ तो आज हमको भोगना पड़ेगा। अच्छा काम करते हुए भी हमें भोगना पड़ेगा। अब पीछे का पुण्य आ गया और हम बुरा काम कर रहे हैं तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस कर्म जो अभी हम वर्तमान में पाप कर्म कर रहे हैं और हमें पुण्य पीछे का आ गया तो वो हमको लाभ देगा। तो पाप कर्म का फल लाभ तो होता नहीं, धर्म का फल हानि तो होता नहीं। लेकिन धर्म करते हुए भी हानि देखा जाता है और पाप करते हुए भी लाभ देखा जाता है। ये पूर्व का है, आज का जो कर्म है वो आगे हमें देगा। इसलिए हमको बहुत संभाल के अपनी नई जीवन की जो क्रियाएं हैं उनको बहुत संभाल के करना चाहिए, नहीं तो भोगना पड़ता है। अब इस जन्म का जो भजन का है वो आगे उसका फल मिलेगा। तो पेमेंट महीना के बाद ही मिलती है। लेबरी बात अलग है कि लेबरी में भी शाम तक तो इंतजार कर तो ऐसे ही थोड़ा अंतर आए में एक जन्म के बाद भी हमें अपने कर्मों का, अगर कोई भयानक पाप बन जाए तो फिर तुरंत लागू हो जाता है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल की हानि। जैसे किसी संत महापुरुष की हत्या, संत महापुरुष का अपराध, फिर वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, वो तुरंत लागू हो जाएगा। वैसे कोई पुण्य कार्य जो तत्काल असर करते हैं? हाँ, ऐसे ही पुण्य कार्य है कि तत्काल आपको संभाल देंगे। इसीलिए जैसे अनुष्ठान कराया जाता है ना ब्राह्मणों से, वो तत्कालिक अनुष्ठान लाभ देगा। अब वो मृत्युंजय का जप कर रहा है और उसकी मृत्यु योग आ रहा है, वो काट सकता है मृत्यु योग को। मंत्र में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भावी में सेकंड त्रिपुरारी जो भाग्य में लिखा हुआ उसको भी मेटा जा सकता है तपस्या, भजन, अनुष्ठानों के द्वारा। ओमांश बंसल जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी क्या दूसरों के कर्मों में दखल देना उचित है? महाराज जी अगर कोई गलत कार्य या राह पर है तो उसे रोकना चाहिए या सत्मार्ग पर अगर है तो? हमारी बात माने तो,
अगर वो गलत कर रहा है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप, वो हमारा अधिकार हो, हमारा मित्र हो, हमारा कोई संबंध हो, रिलेशन हो। उपदेश वही लागू होते हैं जहाँ शिष्यता हो या मित्रता हो और हमारी बात का कोई भाव रखे हो। तो हमें लगता है कि जब तक हमारा कोई भाव न रखता हो तब तक उपदेश नहीं देना चाहिए, नहीं तो उपदेश भी व्यर्थ जाएगा और आपको दुख भी होगा। या तो वो पूछ रहा हो तो आप बोल सकते हो, और या अपना कोई निजी जन हो तो आप बोल सकते हो, अन्यथा उपदेश करना वो उपहास का पात्र बनना है। राधा राधा राधा।
thoughts.
Hi guys, thanks for coming. Uh, I'm glad you guys are here, and I just love to engage you guys and keep it more working, keep more of traction as we develop more into our personal branding. That being said, what I have in store for you today is these four topics. I want to be discussing a little bit about agentic AI. I'm very excited about how these agents actually work together to bring out the best from LLMs. Uh, how these architectured in the best possible way, and how have different people think about it to how have different people think about it to how have different people think about it to bring the best out of LLMs, bring the best out of LLMs, and how can we drive this forward uh, and make new changes so that we can bring out new understandings and new meanings from the existing dataset pool, and basically get an addition like a Jarvis or a Targus kind of AI bot or AI assistant that helps you to do all the meaningful tasks better, faster, cheaper, and just more reliable. So, how do you do that? So, I also need to do, we will study some systems in the agentic AI, how the systems are architected. That's my main goal, and we'll go through that together. The second goal would be to understand the chain of thoughts. Like chain of thoughts was a recent technique that was developed that was developed to chain of thoughts was a recent technique that was developed to learn and query the LLMs with the right set of questions. So it's internal and looped querying of LLMs and asking it meaningful questions and in the right manner. So right questions in the right manner would lead to much more meaningful answer. That's the premise of chain of thoughts, and we'll be going and studying through that in our in our upcoming discussions in this upcoming seminar in that's the next step on the line. There's a next goal essentially. Chain of thoughts, that is good. The other idea is to understand anything that is how is this developed, and what are the different other tools and techniques that are being developed here. What are the drawbacks of chain of thoughts? So let me paint the picture for you guys. So agentic AI will be more system architecture. In the particular context of financial agents, which is FinGPT and FinGPT, Time VLM, and we'll of course study our main one, which is Alpha Agent. These agents are all financial agents. So the idea is to be able to extract meaningful insights about financial, or being able to do some good financial querying to understand and extract meaningful patterns from the existing financial data. Chain of thoughts is about how do we design such an architecture, or how do we ask meaningful questions? How do we ask meaningful questions? How is it defined? How is it different from other techniques? How does it reduce hallucination? That's a very important one for me. How do we include latest information from internet without fine tuning
or training. So discussing that and going with that with you, my family, my YouTube family. The whole idea is to be able to share my insights as an AI researcher and be able to tell you guys how to think and how are the systems that are being architected, what are the insights behind that. So you have some understanding of how these are designed, how are they what stage are they currently, what have they missed out, and how does the current systems and these architectures and the current growth in the AI space, which is a huge momentum, it has a huge momentum behind it right now, how does that impact your life directly, and what's on the horizon, how are these systems going to evolve, and how does this system actually impact the current industries that are in the place right now, how are those industries going to be evolving. So those are my aims and my motives that I want to be sharing with you guys, and what I see coming on the horizon, my crisp edge level understanding that are coming straight from the source. And I will share you my insights on how these tools are going to impact you in different ways, so you're always ahead of the curve and you also understand the insights that can possibly influence you in a good way, hopefully, and help you understand the things in life better. Its drawbacks. Lastly but surely, we're gonna be discussing a little bit about super resolution, which is a current AI based work I'm doing. So the AI super resolution is about, if I have, let's say for example, an image, a which is small image, which is, let's say, a watered down version of like previous old movies, which is like grainy, bad, maybe also black and white, just for example. Can you restore its authenticity to like a large, keeping its authenticity, can you restore the image into a much fine high resolution image, and can you make it from 128 or like 64 cross 64 into like a 4K image? Is it possible? The answer is yes. We can train the systems to learn how a high level feature or high level modality actually looks like, and once it sees a new image, it is able to restore those features using its past history and memory and its understanding about how different systems evolve, or how are different systems, if you give it if you have a smaller sample of it, how would its actual high resolved sample would look like. So that's something I am super interested in, and that's one of my major research. Although there's a twist here. I'm doing this for, instead of 2D or 3D, I'm doing this for 4D data. The 4D data that I have is a texture based crystal symmetry data. So it's crystal misorientation data, which is essentially, if you rub on a cloth, you know it has a texture by just feeding through it. So there is a full science that's developed. It's called crystallographic science in material sciences, that has been developed to study these properties, and it turns out that it has a lot of interesting mathematical understandings to it, and we'll go through how I have designed and how am I tackling a problem of internal inherent symmetry that's embedded in this particular space, and how am I tackling that to actually build a super resolution framework and a network that will be able to solve this issue in a 4D space. So it's a nicer, interesting, challenging problem, and it helps me to think harder and understand our modality better.
so that once I understand the modality, I'm able to take that physics of the modality understanding and make our neural networks physics informed. So the whole goal is to be able to give you insights into making physics inspired neural networks. Once we have that, it will be super nice. This is for the next video. I'm thinking, if we are able to move on enough, that I want to be discussing and going into how the crypto is, where the crypto land is right now. Particularly, I want to be going over and reading and exploring proof of stakes, proof of work, how is it, why is Bitcoin still where it is, why is it the gold mine, why is it the gold standard still, and then why are other blockchains like Ethereum, Polkadot, Avalanche, etc., they are getting more popular. Why is that the case? How is that going to evolve in the coming future? What are level 0, level 1, level 2, level 3 different levels of chain? How we're going to talk about RWA, real world assets, um, that's being digitalized and democratized on these different blockchains that are being developed by these big companies recently. Because finance sector is now trying to monopolize on this area, trying to control the systems that make these chains. And once they have the control of the systems that make these chains, they can basically redistribute any assets on the chain, and they're able to uh, have a bigger pie, or maybe at least have a more controlled flow of the assets on the chain. So that being said, there's a huge change in going in the financial system as we are speaking, and it has a huge implication in everyone's life coming forward. And we're going to be discussing more of that in the coming future. So yes, that's the agenda for today. These first 3 topics, and let's dive in. Proof of work, proof of stakes. Bitcoin, why is it a gold standard? Other blockchains, why? Level 1, level 0, level 1, level 2 chains. Liquidity pools. Understanding how much coin is worth. How is this coin different from blockchain? Yep.
Okay, let's start with super resolution. Interesting. हमको
what does adding symmetry like this even mean? They are discrete groups. That is why we isolated the groups in the first place. And parallelized. Merges the confidence to prevent numerical jumps. How is the confidence merged? Explain properly. And how does it help?
You're asking a deep question about how neural networks represent uncertainty. When we use softmax projection instead of hardmax, we're not merging the physics, the crystal symmetries. We're merging the signal representation, the features based on the network's confidence. Okay. Proper explanation of the mechanism and why it solves the blocky artifact problem. Imagine a single pixel at the boundary. The network is analyzing it to decide which symmetric group it belongs to. Step A, the scores. Inside the group soft projection, the self.scorer layer looks at the full features for all 24 channels and outputs a raw score logit for each. Hypothesis 0, 5, 4.8, 2, -2, low confidence. Others are low. The softmax probabilities. We apply the softmax scores. This converts the raw probabilities into a probability distribution that sums to 1. P h0 is 0.55. P of h5 is 0.45. Step C, the merge. We compute the final feature vector f final by weighting each group's feature like this. We are not adding the rotations. We are adding the neural feature vectors. How it helps to understand why this fixes the blocky artifacts, we have to look at the gradient, the rate of change between two neighbor pixels. Imagine pixel A and pixel B. The true underlying physics changes smoothly, but the network's preference flips slightly. Pixel A, score at 0, score h5 4.9, pix at 0, group 0. Pixel B, score flips, hard max, pix h5, group f5. Group 0 and group f5 are learned by different convolution layers. They live in different numerical spaces. F group is 0.1, 0.2, 0.1. F group 5 is 0.8, 0.9, 0.8. The difference between pixel A and pixel B is huge, 0.7. The subsequent upsampler sees this jump and creates sharp artificial edges, a block. The softmax, the soft merge success. Same pixels, same scores, but now we use confident merging. Pixel A 55%, H0 45%, H5. Output is 0.55 F0 plus 0.45 H5. I see. So the feature merging is happening here. Difference between pixel A and pixel B is now very small and smooth. The feature vector slowly morphs from group 0 to group 5 as you move across the pixels. The upsampler sees a smooth gradient. It draws a continuous grain boundary instead of a jagged block. While the symmetry groups are discrete, the decision bound between them is neural network inside is continuous. Hardmax forces a discrete cut to early in the network, creating artificial cliffs where the confidence is split. Confident merging delays the discrete decision. It passes the uncertainty to the next layer, the multi-hypothesis slurp. The multi-hypothesis layer takes this smooth mixed feature and mathematically resolves it into sharp, correct crystal orientations without the checkerboard artifacts. I see. Let's try this. Let us try this. Yeah, okay. Soft projection. Init.
So it just comes right after you perform projection like this. Smooth projection layer for feature merging. Between groups. Yes. Don't do this max pooling. Let's try this. Patch session minus T slurp lift on this guy. Experiments lifted conf visualizations. What if can multi-slurp hypothesis be the problem itself? It is unlikely to be the root cause of the blockiness. That is almost certainly the hard max projection. But the multi-slurp hypothesis is absolutely acting as an amplifier that makes the artifacts worse. Your softmax temperature is too aggressive. You're dividing by 0.2 multiplied by 0.5. This makes the softmax extremely sharp. Sampler a smooth bilinear gradient between pixels. Your sharpmax focus is to become 0001. It turns a smooth map into a hard step. If there is any tiny blockiness coming from the previous layer, this softmax creates a hard, jagged edge. Essentially binarizes the image into patches. Temperature to 1 or learn it. This allows the hypothesis to blend smoothly.
Where is the temperature? Swiss achar. Swiss achar. Here it is.
Let's try this.
the weights are being upsampled using bilinear. Bilinear splitting of a low resolution grid creates a grid of pyramids. When you apply the sharp softmax, you slice these pyramids, creating squarish contours. No, I missed it in the previous square. I scrubbed the previous, but failed to write the line of course. Tan H. Okay. When you bilinear upsample plus minus next to minus 50, the slope is effectively vertical. It's a hard step even before softmax. Tan H forces the weights into -1 to 1. Devolution happens in smooth bounded regions, preventing the pyramid clipping artifacts. Okay. I see. It's a balance. It's a balance. It's a balance. It is a balance. I think this has helped at least a little bit. At least a little bit. Looks like these things are getting more sharper faster. Artifacts until later. How can this be solved? Is this an issue? How can this be solved?
gradient weighted loss or edge weighted loss. Okay. Spatial gradient on the ground truth is to create a weight map that forces the network to put trainer edge weighted loss.
Hello. 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 One second. Hello. Hello. Can you hear me? Hello, baby. How are you? Very, very nice, bro. I'm very, very good. I'm very, very good. Mm. Hmm. Very, very nice. Very, very, very nice. Made some changes. So we're seeing this amazing, relatively nicer maps, but this is the issue we are trying to solve. Let's see if gets solved to some extent. I did not get the camera. I got the mic, but I don't think that's gonna be good. I ordered somehow ordered two mics and I'm probably gonna return both of them. I ordered DJI finally. We'll see how it works. No, no. I'm not. I honestly don't know because it has to be used through my phone. It has that transceiver Lightning port, so I can't use it with my Mac. So yeah, it's weird. I want something which can be used with both. DJI. No, but this Lightning port does not connect with my laptop with MacBook Air. Your MacBook would have, bro. No. MacBook Air does not have it. That's why it's slim. That's why it's light. All its form factor is pretty small. Yep. This is relatively nicer before from before getting there. Looks like it's getting there. Made a lot of changes. We'll see. We shall see how it works. We shall see. We shall see. Looks like it's getting less and less dense. It's getting more bluish. The green lines are going away. Here also. Here also. Here. You see? No. You see? No. It gives you the pattern, but the pattern is going away. See, you see this. This is getting diffused. I'll show you the previous last. Let's say this one. Maybe not. Maybe not. I thought it was getting diffused. It learns. It will get reduced, like I know, but the thing is, it is not learning to smooth these. That is the major issue here. It has to learn to smooth these things. And it is not doing that, which is getting me fucked up. This is the plot I can use to see what is happening. There should not be any greens here.
It'll be just blue, blue, like this. Blue, blue, blue. This should be the original. This should be the actual thing. Blue, blue, blue. There should be no blue. Green's here. Tints green here. I can compare this with this one. This one has more green here, relatively. So green is reducing. Yep. It will reduce the whole, but the problem is it should not, it is reducing slowly now. So it will reduce, but it will now not learn much. I have a, I didn't want to do this, but looks like I have to do this now. The final thing I can, one final thing I can think about might be useful is this. सिप्पू से पाले दिल सोचे दुनिया झट पैदा हुआ बस छोड़ वास्ते I will do this. I'm just gonna like make a few changes, then I'm gonna put it on training and forget it for like today, essentially. Maybe keep checking it like between. Yep. That and then I'm gonna. You don't see the stream? I did it. What do you mean? Not initially. I took like 30, 40 minutes. After that, I started. Yeah. Yeah. Well, it was open from yesterday. Na, I was like, let's see what is he saying. He's articulate. He's very articulate, and his stream of thoughts is very clear. I can see that. His theory of mind, whatever you wanna say, systems are very clear. He knows, like he's like in his mind, the picture is fully like clear. Like there is no twist and turn. There is no like blind spots. His system is closed and complete in his mind. Might be wrong, might be right, whatever. His but system is complete. There is no blockiness. There is no jaggedness there, which is very comforting. No, but he's a very articulate person. He's very articulate. He's clear. He's clear. His tips like he's there is a difference between a person who memorizes and the person who's like speaks from a knowing. Yeah, understanding and knowing. Like he speaks from like it's channeling through. Like it's live experiential feeling. Like there's a lot of live experiential feeling. Like it's like been there, done that, thought that, lived that. Like any thoughts you're having, I've thought through it. Like that's the feeling you get, which is very nice. Yep. Mm. Yeah. He's a pioneer. He can destroy most of the people. I think most can like most his argument and logic was very clear. Oh, I didn't know that. Oh, विराट कोहली भाई सेंचुरी मार दी उसने. ऐसा बोल रहे हैं लोग सेंचुरी. आई डोंट नो. आई डोंट केयर.
think so. Hmm. Yes. But it was still, they got bad. They got beaten very badly. I think something happened. The last 2 to 3 matches, they got beaten badly. Yeah. Mm. ये क्या भाई? खाना वास्ते थोड़ा बोलता है वो। खाना वास्ते बोलता है, अच्छा। मतलब छोड़, मतलब कुछ और मेरे को पता नहीं, मैं छोड़ वास्ते सुनता था, पता नहीं भाई। I don't know, खान वास्ते बोलता है। खा अच्छा भाई। मेरे को नहीं लगता हम दोनों सही बोल रहे हैं, मुझे लगता है कुछ और ही है। um, Diljit Singh, this girl. Oh my God, la 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 la. What's up, dog? ये है ना? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। जट पैदा हुए बस। हाँ, जट पैदा हुआ भाई दोस्त। बॉर्न टू शाइन। छौण, वही मैं कह रहा, छौण बोलता है भाई। आई नो। खान थोड़ा ना बोलता है, छौण बोलता है, देखो। छौण बोलता है, छौण। आई डोंट नो व्हाट द फक इज छौण ब्रो। स्वैग होता है क्या? छौण इन पंजाबी। चौहान नहीं, छौण। चौहान। छौण। छौण। छौण वहां से थे। फन और फ्रॉलिक और प्रैंक, मैरी मेकिंग इन सम नॉटी वे। हाँ, छौन वही लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंजाबी वर्ड छौण वास्ते? मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज मैरी मेकिंग, फन एंड फ्रॉलिक एंड और प्रैंक। टोरा टोरा। पॉपुलर, टू बिकम पॉपुलर। हाँ भाई, जट्ट पैदा हुआ उसे छोड़ वहां से थे भाई। यस ब्रो, आई हैव सम अमेजिंग थिंग टू टेल यू। आई वेंट आउट यस्टरडे नाइट, ओके। आई स्टार्ट, आई स्पोक द मोनोलॉग अच्छे से बोला, यू शुड प्रॉब्ली वॉच इट। आई स्टॉप दिस तो। नहीं, मोनोलॉग ही तो था वो। क्या मोनोलॉग मतलब बताया मैंने मैं क्या कर। ओके, अच्छा नहीं था। ओके।